2020 द ईयर ऑफ लॉकडाउन। रिमेंबर, हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ एकदम से। हर कोई घर में बैठ गया, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि अब क्या करना है। इस लॉकडाउन पे मैंने और जसप्रीत ने मिलके हमारे नया ऑफिस का सेटअप किया। सो इस वीडियो में हम जानेंगे उस सेटअप के बारे में। We made this awesome looking office all by ourselves, right from painting the walls to getting each and every element that improves my productivity on a daily level. Hello guys, my name is Robin Saini and if you're new here, please hit that subscribe button. As a photographer, pictures खींचना ज़्यादा बड़ा और डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बट सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारी लाइफ में आता है वो होता है पिक्चर्स एंड वीडियोस को एडिट करना। इसीलिए हम जिस ऑफिस स्पेस में बैठते हैं उसका एक अच्छा वाइब हमें देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Hence I made this office so that every day I am kicked about coming to the office. यहाँ पे मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। Also the entire office lights and music are automated by Alexa हैं। Now जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस ऑफिस में है वो ये ह्यूज वुडन डेस्क है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दिस इज़ अ कस्टमाइज्ड वुडन डेस्क जिसमें आपको कहीं से भी कोई भी केबल हैंग करती हुई नहीं दिखाई देगी, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। मैंने बहुत सारे टेबल्स इंटरनेट पे देखे, उसके बाद मैंने एक 3D मॉडल एक टेबल का बनाया जो मैंने अपने लोकल कारपेंटर को दे दिया, शोइंग दिस इज़ माई विजन एंड हाउ आई वांटेड माई टेबल। अब जानते हैं इसके मेन की पॉइंटर्स जो इस डेस्क को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ अ ब्रिलियंट केबल मैनेजमेंट सिस्टम। डायमेंशन जो इस टेबल के हैं वो है ये 6 फीट विड्थ में है, 30 इंचेस इसकी हाइट है। टेबल है, इसकी डेप्थ 4 फीट है, इसलिए मैंने एट द बैक साइड एक 18 इंच की डेप्थ का एक कंपार्टमेंट बना दिया है जहाँ पे मेरी सारे के सारे प्लग पॉइंट्स, केबल सारे के सारे वहाँ पे स्टोर रहते हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें मैंने आइकिया का केबल मैनेजर यूज़ किया जिसमें मैंने ड्रिल होल्स करके उसे ऊपर की तरफ लगा दिया है, जहाँ पे 2 मॉनिटर्स की केबल्स, पीसी एंड मैक की केबल्स, थंडरबोल्ट की केबल्स, यूएसबी हब्स, हार्ड डिस्क केबल, कार्ड रीडर्स, मैकबुक प्रो की केबल्स, हर एक चीज़ एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से लग चुकी है। तो गाइज़ आपने देखा होगा बैक साइड से ये थोड़ा सा मैसी ज़रूर दिखता है, बट वो क्योंकि दीवार की तरफ चला जाता है वो पार्ट, तो इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं देता, बट सारी की सारी केबल्स उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज होके रह जाती हैं। और अगर आप इस टेबल को फ्रंट साइड से देखते हैं तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल फाइंड 2 ड्रॉर्स, मिडल में एक लंबा सा ड्रॉर, और ऑन द राइट हैंड साइड यू विल फाइंड दिस ह्यूज बिग ड्रॉर। नाउ एवरी ड्रॉर इज फिल्ड विद माई थिंग्स दैट आई रिक्वायर ऑन रेगुलर बेसिस सो दैट आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर एन पर्टिकुलर आइटम। द डेप्थ ऑफ बोथ द ड्रॉर्स वॉज केप्ट इन माइंड सो दैट द ऑर्गेनाइजर्स फ्रॉम IKEA कैन फिट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। टॉप वन होल्ड्स द CA Fast card readers, XQD card readers, some pouches from Think Tank to hold various kind of cards. The other stuff that is included in the drawer is the USB-C card adapters, Jabra Active 75T which I use for working out and cycling. Once you lift the ऊपर वाला IKEA का organizer, you will see it has a similar one which is down, which has another USB 3 to Thunderbolt cables and other small elements which I use on daily basis. Now let's talk about the bottom drawer. The bottom drawer is what hold all the audio gear and all the action camera kit which I have. So starting from the back, we have the Rode VideoMic Go, Rode Reporter, we have various mounts for the GoPro cameras, we have Insta360, I have GoPro 7, Insta360 module, then the 4K module and lot of other accessories, you know, which fits all these cameras. Next to it is the Sennheiser G3 and the Rode VideoMic Pro. Now moving to the right side, now this is a huge drawer which holds my Epson L50 printer. At the back of the drawer, there's a round hole from where the cabling is again passed through. I also have an Epson LW400 mini printer to stick small stickers on my drives or on my cards. Now let's move on top of the table
where my main editing monitor for pictures and videos both is the BenQ 32-inch PD3200U. It's a brilliant monitor if you want to edit pictures and if you want to edit videos, because it gives you both sRGB and Rec 709 mode in it. Next to this monitor is a 30-inch monitor from Dell. अगर आप ध्यान देंगे दोनों monitors के नीचे आपको कोई भी वायरिंग नहीं दिखाई दे रही है, because ये दोनों monitors को जिस आर्म ने होल्ड किया है वो Lumni कंपनी ने बनाती है. I'm going to share the link in the description. It's a very strong built monitor arm and it also has a cable management within it. Yes, if you see it from the behind, yes, you will still see some cables dangling, but that comes behind the monitor, so nothing can be seen from front of it. Now let's talk about my main editing build. So from the last 10 years, I've been editing everything on the Apple ecosystem. From this year, I moved to a totally new system, which is a Windows-based system. If we talk about the specs, this is AMD Ryzen Threadripper 3970. It's a 32-core beast of a machine. The GPU is NVIDIA RTX 3060. It has an Asus motherboard TRX 40XE series. It has 128 GB DDR4 RAM. It has two SSDs of 2 TB each. So both these monitors are also connected to my Windows PC and my MacBook Pro. I will talk later in the video how by just pressing one button I can shift between a Mac operating system and an Windows based system. Guys, सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये जो दोनों systems हैं, Windows वाला और जो मेरा MacBook Pro से connected है, ये दोनों systems को मैंने एक ही कीबोर्ड और माउस से कनेक्ट कर रखा है. वो है Logitech MX Keys जो इनका कीबोर्ड है and MX Master 3 माउस. दोनों सिस्टम्स को मैं एक ही माउस और कीबोर्ड से कंट्रोल करता हूँ. मैं इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे. सो गाइज, लेट मी जस्ट शो यू हाउ दिस सिस्टम इंक्रीजेस माय प्रोडक्टिविटी डेली, especially with the BenQ 3200 monitor. As you see here, I am working on a Windows based system. Now, if I want to shift to Mac OS, all I have to do is plug in a USB-C cable which is already connected from the back on the BenQ monitor to my MacBook Pro. BenQ का मॉनिटर एक पग की के साथ आता है जिसमें जब मैं नंबर 2 दबाता हूँ तो it basically tells the monitor that please take the connection from the USB-C port which is coming from the MacBook Pro. Now if you see, I have shifted to a Mac operating system. क्योंकि Logitech का MX Master माउस और कीबोर्ड भी मल्टीपल 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने इस पर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है. डिवाइस 1 is for Windows, device 2 is for Mac. So all I have to do is press the button on my keyboard and press the button on my mouse. So guys, in a matter of 3 clicks, you can see how easily I moved from a Windows operating system to a Mac operating system. So when I walk into office every morning, I should feel a very nice vibe coming from the office, whether it's a fragrance, whether it's good lighting. Hence, I have automated the entire office on Alexa. And you know, before I coming in, just 5 minutes before that, it automatically plays my favorite music. There's automatically my kind of lighting which I like. Let me show you an example. Alexa, switch off office lights. Okay. Alexa, switch on office lights. Okay. Now let's talk about the room wall colors. They also play a huge role in setting up the entire vibe of the place you normally spend most of your time in. The backside wall which you see here is a charcoal grey wall on which you will see the first drone which I had purchased back in 2013. This was the first drone with a gimbal. Then 2 of my best bike brands, Harley and Triumph. I own one of them. I'm so proud of getting a Harley Fat Boy. If we move down, then I have a couple of awards which I have won over the last couple of years in photography field, and a broken camera sensor to remind you that never ever drop your camera. The section on the left has 2 of my favorite cars. One is a Range Rover and the other one is the Mercedes. They are actually the replica of the exact models, though I don't own both of these till now. But as I said, a lot of things in the office gives me a lot of inspiration. So I've kept this, that I have to work so hard so that one day I can afford to buy one of these. The wall on my left side is a midnight blue wall which has my second setup, which is connected to a Mac Pro with a 34-inch LG monitor. This is a sit and a stand desk from IKEA again, which is this desk. And when I'm bored sitting, all I have to do is just press a button and it raises up to a height which I want to. It also helps maintain your nice body posture.
The third wall which you see here has a theme of emerald green and gold, right from the lamps to the chairs to the wall frames. Now let me show you a cozy corner of the office, which is where I make all my scripts for the videos like this. I also have, I sit there and think about new ideas about shoots, my generic stuff. This is also an area where we keep all our think tank bags and gear. We also use it to pack and unpack. So this is more like a coffee zone, chill kind of a zone in the office. So guys, the basic idea of building up this entire space was to, obviously, one is to get a nice vibe so I can concentrate more on my work, but apart from that, it should also develop as a YouTube space where I can come make videos like this. So this is how my entire space is. I hope you like the video so far. Also, you can follow me on Instagram, which is Robin Saini Photography, and if you want to follow my personal account, which is Robin Saini Official. Do let me know what you think in the comments below. Take care guys, bye bye.